Views. Good morning, students. Today we will discuss about the exercise 6.3. I am your math teacher, Lakshman Kumar, and we will discuss the solution of exercise 3.3, 6.3. First of all, the question number one. The question number one. Question number one is find the value of unknown x in the following diagrams. Okay. कुछ diagrams given है. Then we have to identify the value of x in these figures. X 50 degree and 60 degree. We have this figure in the form of a triangle and the vertices are A, B, C and the angles are x 50 degree and 60 degree according to part A. Okay, now we have to calculate the value of x. It means the value of angle x. Okay, we know that the sum of three angles in a triangle, आपको पहले ही बताया मैंने, the sum of interior angles in a triangle is equals to 180 degree. Okay, sum of interior angles in triangle is 180. Okay, it means the sum of these three, x plus 50 plus 60 is equals to 180 degree. 180 degree. Okay, it means the value of x according to the solution of this equation. Okay, मतलब हम इसमें से x को कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन में. तो उसके लिए सेम प्रोसीजर, पहले इन दोनों को प्लस कर लीजिए. 50 plus 60 is equals to 110. Clear? Is equals to 180 degree. Now x is equals to 180 degree minus 110. Minus 110. जैसे कि ट्रांसपोजिंग मेथड होता है, ट्रांसपोजिंग मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्लस है तो ये तो जाएगा तो माइनस. ओके, अगर ये मेथड नहीं है तो पहले वाले मेथड्स आपने सीखे हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सरसाइज 4. जो भी है हमने इस 110 को एलिमिनेट करना है यहाँ से. तो यहाँ से इसको एलिमिनेट करना है तो हम क्या करेंगे, इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे और एडिटिव इनवर्स इज माइनस 110. दैट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तभी की इक्वालिटी बनेगी. तो दोनों साइड्स पे हम 110 को माइनस कर देंगे. तो 110 को जैसे हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा. ओनली x is equals to 180 minus 110 is equals to 70. Equals to 70. That's your solution. That's the value of x in this equation, in this diagram. Okay. Next one is the second part of this question. In the second part of this question, we have a right angle triangle. We have right angle triangle. Right angle triangle is according to this figure. Here, P, Q, and R. Here, this figure is according to this, and this angle is x, and this angle is equals to 32. Clear? Now we have to calculate value of x. One angle is 30 degree, one angle is x, but the P is according to this structure. We can identify that this angle is equals to 90. This angle is equals to 90. जहाँ पर P सिंबल होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री कहते हैं. तो वही सेम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स in triangle is equals to 180 degree. Clear? Next one, sum of these, angle P is equals to 90, angle Q is equals to 30, and angle R is equals to x is equals to 180. Okay, 90 plus 30 is equals to 120 degree. 120 degree x
is equals to 180. Now, same we have to calculate x. That means we can solve this equation by add or subtract something. इसको हमने eliminate करना है, x के साथ जो भी चीज है उसको eliminate करना है. तो 120 is add with x. It means we have to subtract something. So same amount of angle we have to subtract into both sides. तभी इक्वालिटी बनी रहेगी. तो 1 plus x minus 120 is equals to 180 minus 120. Clear? 120 minus 120 is equals to 0, only x. 180 minus 120 is equals to 60. Okay, this is your measurement of angle x. Okay, next one is पहले acute triangle था, acute angle triangle, this is right angle triangle, and now we have to discuss about the obtuse angle triangle. Obtuse angle triangle, that is in your third part of this third part. Okay, third part के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे. वो तीनों का सम कितना होगा वो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे. अब कुछ एक अलग मेथड देखते हैं. तो वो है फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में we have a triangle according to this figure. Okay, here this angle is equals to x and this angle is equals to x and this angle is equals to 50 degree. Okay, now we know the property that the sum of interior angles in triangle is equals to 180 degree. Yes, 180 degree. Next one, the sum of three angles 50 plus x plus x. Clear? 50 plus x is equals to 180. X plus x is equals to 2x plus 50 is equals to 180. Now we have to solve this equation. According to your exercise 4, we can solve easily this. So first of all, we have to eliminate 50. For this, we can subtract 50 from both sides. Equality should be remain. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का सेम अमाउंट सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो हमने 50 का एलिमिनेट करना है, एडिटिव इनवर्स -50 होता है, तो सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम दिस साइड एंड आल्सो सब्ट्रैक्ट 50 फ्रॉम दिस साइड. 2x 50 minus 50 is equals to 0. 180 minus 50 is equals to 130. Clear? 130. Now we have to eliminate this, and 2 is multiply with x. Multiply with x. अगर इसको एलिमिनेट करना चाहते हैं तो इसका अपोजिट क्या होता है? जैसे प्लस का हमने एडिटिव इनवर्स लिया यानी नेगेटिव सब्ट्रैक्ट किया, तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई का क्या होता है? डिवाइड. तो सेम अमाउंट वी हैव टू डिवाइड इनटू both sides for remain equality. So we have to divide both sides by 2. Both sides by 2. So 2 से 2 cancel out हो जाएगा. That means x is equals to, we can divide this and the angle is 65. 65 is your answer. Okay. Same इसी तरीके से हम next वाला कर सकते हैं. Okay. That is your fourth part. फोर्थ पार्ट में हमें क्या चीज गिवन है वो देख लेते हैं. सॉरी, फिफ्थ पार्ट. इन फिफ्थ पार्ट वी हैव अ ट्रायंगल एंड द all measurements are same. That is given x, x and x. Clear? Now the sum of interior angles in the triangle is equals to 180 degree. We know that. Now the sum of these three, x plus x is equals to 180 degree. Now x plus x is equals to 3x is equals to 180 degree. Clear? Now we have to solve this equation. Okay, that is very simple. We have 3 multiply with x, so we have to divide same number in this equation into both sides. That means 3x divided by 3 and 180 divided by 3.
ओके, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली x एंड 3 डिवाइड सॉरी 180 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 6. दैट्स योर आंसर. क्लियर? नेक्स्ट वन, ये कौन सा है जिसमें सभी एंगल सेम होते हैं? तो मैंने ट्रायंगल्स के टाइप बताए थे. तो ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल ये क्या होता है? आइसोस्केल होता है. फिर क्या होता है? स्केलिंग ट्रायंगल. 3 टाइप्स होते हैं ना. नेक्स्ट वन इज पार्ट 6 पार्ट ऑफ दिस. फर्स्ट क्वेश्चन, 6th part of this, we have a figure and it is given as this, and this is x and this is 2x. Okay, now we have to calculate the value of x. Okay, we know that the sum of interior angles in triangle is equal to 180 degree. Okay, now sum of 3 angles, x plus 2x plus this is equals to 90. मैंने हमेशा बताया कि जो ड्रॉ होगा it means it is 90 and the sum of 3 angles is equals to 180. Now x plus 2x is equals to 3x plus 90. X plus 2x, 1x plus 2x is equals to 3x. 90 is equals to 180. Now we have to solve this equation. Okay, same number. First of all, we have to eliminate this. Okay, eliminate this for elimination this we have to subtract same amount of angle into both sides. It means 90 को eliminate करना है तो 90 ही subtract करेंगे दोनों sides. 180 minus 90. Clear? 3x 90 minus 90 equals to 0. 180 minus 90 equals to 90. Clear? 90 minus 90 equals to 0 and 180 minus 90 equals to 90. Now we have to eliminate this. We have multiplication 3 between 3 and x. So we have to divide same number into both sides. 3x divided by 3 and 90 divided by 3. Clear? 3 से 3 cancel out हो जाएगा, only value x and 90 divided by 3 that is 30. Okay? 30 is your measurement of x. Okay, next one is now the second question. Find the unknown value of x and y. Now the question is second of exercise 6.3 of exercise 6.3. Question number 2 is we have to identify the value of x and y into given figures. Okay. We have first figure is according to this x, y and 50 degree and this angle is equal to 120. Clear? Now we have to calculate value of x and y. अब इसमें हमारे पास कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं उसको हम फॉलो कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल the opposite interior angles, sum of opposite interior angles is equals to the exterior angle. ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था about the triangles. तो वो क्या था? Sum of opposite interior angles is equals to exterior angle. ओके, ये हमने रीड किया. तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर, मैंने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बात बताई थी. 120 डिग्री जो है उसका एडजेसेंट एंगल छोड़ दीजिए. एडजेसेंट एंगल मतलब इसका वर्टेक्स और एक आर्क कॉमन, तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है. इन दोनों के मतलब ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल के क्लोजेस्ट जो एंगल है दैट इज इट्स एडजेसेंट एंगल, इसको हमने छोड़ देना है. तो बचे हुए दो कोण हुए 1 and 2. These are the opposite interior angles. That means sum of these angles x plus 50 should be equals to exterior angle, that is 120. Clear?
एडजेसेंट एंगल इसका छोड़ देना है जो कि y है, इसको छोड़ देंगे. ओनली वी हैव टू इंटीरियर एंगल्स, दीज आर अपोजिट टू इट. दैट मींस द सम ऑफ these two is equals to this. So x plus 50 is equals to 120. Now we have to solve this equation by subtracting or add something. So 50 is add with x. We have to eliminate this. That means minus 50 in both sides. Minus 50 in both sides. It means 50 and 120 minus 50. 50 minus 50 is equals to 0. 120 minus 50 is equals to 70. Clear? तो ये 70 वैल्यू हो जाएगा. Clear? That's your value of x. Now the value of y. Okay. Y and 120 degree. These are the adjacent angles and also a linear pair. Linear pair है. Linear pair का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन के ऊपर बनने वाले दो एंगल जिनके अंदर एक आर्म कॉमन हो. तो these two are linear pair and the sum of linear pair is equals to 180 degree. तो सिंगल लाइन है तो इसका दोनों का सम 180 डिग्री होगा. दिख ही रहा है. That means we know that sum of linear pair angles is equals to 180 degree. Clear? Y plus 120. Y plus 120 degree is equals to 180. Clear? Now we have to eliminate 120. So the subtract 120 into both sides. That means y plus 120 minus 120 is equals to 180 minus 120. Clear? 120 minus 120 is equals to 0. Only y. 180 minus 120 is equals to 60. That's the answer of y. Okay. We can calculate y value by the another method. That is the sum of these three angles. You know that sum of the interior angles of a triangle is a 180 degree. Is 180 degree. उससे भी हम इसको solve कर सकते हैं. Because we know that x value is equals to 70 degree. The sum of these two plus this 50 plus x plus y is equals to 180. And the value of x is equals to 70. Now we can calculate y. तो उस मेथड से भी आप y को calculate कर सकते हैं. Okay. Next one. Next one is part 2. Part 2 of question 2 is 50 degree. 50 and this angle is equals to x and this angle is equals to y and this angle ये दोनों इंक्रीज की हुई है ना दोनों लाइंस and this angle is equals to 80 degree. ओके. थोड़ा फिगर डाउन करके बनाया हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो. क्लियर? This angle is equals to 50, this angle is equals to x, and this angle is equals to y, and this angle is equals to 80. Clear? Now the question is that how we can calculate x and y value. Okay. First of all, we have to check 80 degree is the exterior angle of this or not. Exterior angle of this or not. हमने ये चीज चेक कर ली है कि ये इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है. तो उसके अंदर क्या होता है, जब भी हम एक्सटीरियर एंगल ड्रॉ करते हैं तो हमें एक चीज पता होता है, हमने कोई भी एक आर्म को इंक्रीज कर देना है तो सेकंड आर्म से जो बनी हुई आर्म है उससे जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल. अगर यहाँ पर बनाना है तो ओनली वन आर्म वी हैव टू इंक्रीज, देन द एंगल बिटवीन इंक्रीजिंग आर्म एंड द सेम आर्म ऑफ द ट्रायंगल दैट इज एक्सटीरियर एंगल. बट इसमें तो हमने दोनों साइड्स को इंक्रीज कर दिया, तो ये उस तरीके का एक्सटीरियर एंगल नहीं है जो कि हमने ट्रायंगल्स में की प्रॉपर्टी में पढ़ा है. So it means we can't consider here that 80 degree is the exterior angle which we have to put the property that the sum of opposite angles is equal to the exterior angle. यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते क्योंकि उस तरीके का एक्सटीरियर एंगल नहीं है. तो अब हम क्या करें, हाउ वी कैन कैलकुलेट y.
That is very simple. We have two crossed lines. We have two crossed lines, and it is the point of intersection. Point of intersection, we have two angles, angle Y and angle 80. Clear? And these two are opposite angles. These two are opposite angles. Opposite, vertically opposite angle हमने किया हुआ है. Whenever two lines are intersecting with each other, then the intersection points have some pairs of opposite, vertically opposite angle. Okay, vertex same है और उनका opposite जो angle बनेगा, these two should be equals. These two should be equals. Okay, it means we can put here the property that the angle y is equals to 80 because these are the vertically opposite angles. We know that vertically opposite angles are equal with each other. Equal with each other. Clear? It means y is equals to 80 degree. These two are vertically opposite, so y is equals to 80 degree. Now, the value of x. Now we know that the sum of interior angles of the triangles is equals to 180 degree. Sum of interior angles of triangle is equals to 180 degree. Is equals to 180 degree. Now the sum of these three interior angles, x plus y plus 50 degree, is equals to 180 degree. Okay? इसमें मिसप्रिंट है मेरे बुक में, ये 50 है या 60, ये थोड़ा सा आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है. अगर 60 है तो 60 के अकॉर्डिंग करोगे, अगर 50 है तो 50. तो x plus y plus 50 is equals to 180 degree. Okay? Now the value of y, we know that is equals to 180 degree. We can put here the value of y, that is 80 degree plus 50 degree plus equals to 180. Now the sum of these two is equals to 80 plus 50 is equals to 130 degree. 130 degree is equals to 180 degree. Okay, clear? Now we have to eliminate 130. For this, we have simple method, that is we have to subtract both sides same amount. तो 130 हमने eliminate करना है, तो same amount 130 हम minus कर देंगे दोनों sides. तो 130 minus 130 is equals to 180 minus 130. Now 130 minus 130 is equals to 0. Is equals to 180 minus 130 is equals to 50. Okay. Now the value of x is equals to 50 degree. Clear? Any doubt, guys? No. Now the next part of this question. Okay. The next part of this question, that is same as this. Okay. यहाँ पर vertically opposite angle बना हुआ है, तो x और 60 सेम होंगे, तो y को कैलकुलेट कर सकते हैं. And the next part is this. Fourth part आपका homework है, that we have to try, that you have to try at home. Fifth part we have to do next. Fifth part is according to this way. This angle is equals to 90 degree, and this angle is equals to y, and this angle is equals to x, and this angle is equals to x. Okay. How we can calculate y, x, and x? देखो ये दोनों lines, these are intersecting with each other, so it is the common vertex of these two angles, and these two are vertically opposite angles. It means y is equals to 90 degree. Y is equals to 90 degree. Y is equals to 90 degree. Now the next is the sum of these three angles.
the sum of these three angles. Okay, these are the three interior angles of a triangle. The sum of these three is equal to 180 degree. So x plus y plus something, x plus x plus y is equals to 180 degree. Now the value of y is equals to 90 degree. X plus x is equals to 2x. Okay, x plus x is equals to 2x and y is equals to 90 degree and is equals to 180 degree. Now it is a equation in one variable. We can solve this. We first of all we have to eliminate 90. So same amount subtract into both sides. 2x plus 90 minus 90 and 180 minus 90. Clear? 90 minus 90 is equals to 0. 2x is equals to 180 minus 90 is equals to 90. And x is equals to, now we can calculate x. First, for this we have to eliminate 2. So 2 is multiplied with x, so we have to divide 2 both sides. Okay? 2 into both sides. Okay, 2 से 2 cancel out हो जाएगा. X is equals to 90 divided by 2, that is 45 degree. That's your answer. Okay. Next one is okay. Next one is sixth part. That is complicated problem for this question. Sixth part is complicated question, a problem. Okay, these two are increased, and this angle is equal to x. Okay, and these two are also increased, and this angle is equal to x. Okay, and these two are also increased, and this angle is equal to also x, and this value is equal to y. This angle is equal to y. Now the question is that how we can solve this, because no measurement of any angle is given here. Okay, कोई भी measurement किसी भी angle की given नहीं है, but हमें कुछ properties पता है, उसकी help से हम इसको solution कर सकते हैं. First of all, we have vertically opposite angles. Okay, some of the vertically opposite angles. This angle is vertically opposite to this. This angle is vertically opposite to this, and this angle is vertically opposite to this. So it means these two are equal with each other. Vertically opposite कैसे है? These two intersecting with each other. Then the intersection point is this. This is the vertex of these two angles. These are that is common, and these two are equal with each other. Vertically opposite angles are equal with each other. X is equals to y. First equation is this. X is equals to y, and this angle is also equals to x, and this angle is also equals to x according to vertically opposite angle. This angle is vertically opposite to this, and this angle is vertically opposite to this. So this is x, it is also x. This is x, so it is also x. Now the value sum of these three angles. Now the sum of these three angles. These three are the interior angles of a triangle. So the sum of these three angles is equal to 180 degree. It means x plus x plus y is equal to 180 degree. ये मैंने statement लिख दी है. Okay, 180 degree. Now the value of y should be equal to x. इसके अंदर vertically opposite जो हमने property लगाई थी, तो x is equal to y था. तो y is equal to x, okay, it is x plus x plus x. Y is also equal to x. It means 180. Clear? Now x plus x is equal to 3x. Is equal to 3x. Okay. Next one, x plus x is equal to 3x. Now we have to calculate x. For this we have to eliminate 3. So the both sides of this equation divide by 3. So 3x divided by 3 and 180 divided by 3. 3 से 3 cancel out हो जाएगा, is equal to x. 180 divided by 3, that is equal to 60.
Okay, that's your answer. Answer of this sixth part. Okay, next one is exercise 6.4. Next one is exercise 6.4. 6.4 is the quite simple exercise. Okay, ये आपने नोट कर ही होगा. 6.3 is completely based on two properties. These are exterior angle is equal to the sum of two opposite angles. Okay, and two opposite interior angles, and the sum of interior angles should be equal to 180 degree. और ये property जो है हमने exercise 4 में पहले exercise 5 में हमने रीड कर ली थी, lines and angles. Okay, now exercise 4, 6.4. Exercise 6.4. एक प्रॉपर्टी हमने ली थी ट्रायंगल्स के लिए कि कोई भी एक ट्रायंगल है, सपोज वी हैव दिस ट्रायंगल, ओके, A, B and C. The property of this triangle is according to this. Then the sum of any two arms should be greater than third arm. मतलब अगर हम AB प्लस BC लेंगे तो इन दोनों का सम हमेशा ही किससे बड़ा होगा? थर्ड आर्म से बड़ा होगा. क्लियर? इसी तरीके से कोई भी दो आर्म ले लीजिए, AB प्लस AC, ओके, शुड बी ग्रेटर देन BC, या फिर AC प्लस BC ले लीजिए, AC प्लस BC शुड बी ग्रेटर देन AB. जो ये तीनों मतलब इक्वेशंस जो भी है हमारे पास जो बन रही है, इन चीजों को सॉल्व मतलब शो करेगा, वो हमेशा एक ट्रायंगल को शो करेगा. ओके, तो 6.4 का पहला जो क्वेश्चन है वो इसी चीज पे बेस्ड है. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 6.4. ओके, इससे पहले देख लेते हैं 6.3 में किसी का कोई डाउट हो तो. ओके, 6.4 में हमने बिल्कुल सिंपल सा है. इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स. मतलब अब मैं जो साइड्स लिखने वाला हूं, तीन साइड्स, क्या इस मेजरमेंट की तीन साइड्स का एक ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं? तो 2 सेंटीमीटर फर्स्ट पार्ट, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. Is this triangle possible or not? मतलब इन सभी मेजरमेंट का एक ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं? तो ये वाली हम सिचुएशन इस पे अप्लाई करेंगे. We have three sides, 1, 2 and 3. Any two side sum should be greater than third side. It means अगर हम इन दोनों का सम करेंगे 2 plus 3, okay, it should be greater than this side. ओके, मतलब ये क्या आना चाहिए? इससे थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए. क्लियर? तो हमें पता है द सम, हम यहाँ पे यूज करेंगे द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना? क्लियर? थर्ड साइड अगर ये है तो हम इसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं. तो एनी टू वी हैव टू ऐड, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टू हैव टू ऐड 2 plus 3, it should be greater than third arm. So 2 plus 3 is equals to 5, and 2 plus 3 is equals to 5. 5 is not greater than 5, is equals to 5, is equals to third arm, है ना? Third side. It means it is not satisfying this property of the triangle, so it is not possible. So it is not possible that these sides of a triangle, not possible that these sides are the sides of a triangle. Okay, next one, second part of this question. Second part is 3 centimeters, 6 centimeters and 7 centimeters. 3 centimeters,
6 centimeter and 7 centimeter. Now we have to take, okay, the sum of any two sides should be greater than third side. Second part 3 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter. Okay, the sum of any two sides should be greater than third side. देख लेते हैं. First of all, these two, 3 plus 6 is equals to 9 and it is greater than 7. First condition satisfy हो गई. अब ऐसा नहीं है कि एक कंडीशन सेटिस्फाई हो इसका मतलब ये ट्रायंगल हो गया. हमने तीनों को चेक करना है कि इन दोनों का सम इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर देन होना चाहिए, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर देन होना चाहिए. वो चीज चेक करेंगे. तो फर्स्ट टू का हमने कर लिया और थर्ड से वो हुई. अब सेकंड और थर्ड का सम करके देखते हैं. 6 plus 7 should be greater than first. 6 plus 7 is equal to 13 and it is greater than 3. सही है. नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड का देखेंगे सम. 3 plus 7 is equal to 10 and it is greater than second now, that is 6. Clear? So it is possible. It is possible that these are the measurement of the sides of a triangle. ठीक है. नेक्स्ट वन थर्ड पार्ट को इसी तरीके से आप सॉल्व करके देख सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर जो मैक्सिमम क्वेश्चन है 6.4 में वो सभी जो है वो इसी प्रॉपर्टी के बेस है. The sum of any two arms of the side, any two sides of a triangle should be greater than third side. Okay. Question number 2. Okay. Question number 2 is take any point O in the interior of a triangle PQR. हमने एक ट्रायंगल के अंदर कोई एक पॉइंट लेना है इनसाइड और उसके लिए हमने ये चीजें प्रूव करनी है. इज मतलब हमें देखना है कि ये चीज पॉसिबल है या नहीं. देखते हैं. ये ट्रायंगल गिवन है 1 2 and 3 साइड्स का ट्रायंगल गिवन है. इसमें this vertex is equal to P, नहीं, this vertex is equal to P, and this vertex is equal to Q, and this vertex is equal to R, and any point O is given inside. Okay, is given inside. Okay, तो अब ये कह रहे हैं कि first part is of this question, that is OP plus OQ should be greater than PQ. Is it possible or not? ये चीज पॉसिबल है या नहीं. सबसे पहले तो हम ये मेजरमेंट देख लेते हैं. PQ तो इसमें है, ये रहा. अब OP और OQ कहाँ है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OP और OQ, ये देखो P ये रहा, O ये रहा. तो हम इस सभी वर्टेक्स को क्या करते हैं, O से मैच कर देते हैं. तो एक लाइन सेगमेंट आता है. वन लाइन सेगमेंट, सेकंड लाइन सेगमेंट एंड थर्ड लाइन सेगमेंट. अब देखो इसमें OP भी है, OQ भी है और OR भी है. क्लियर? नाउ द सम ऑफ OP and OQ should be greater than PQ. Is it possible or not? Yes, it is possible. इसमें देखो इन सभी आर्म्स के बनने से ये पूरा ट्रायंगल जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया. फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल एंड थर्ड ट्रायंगल. 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गए. तो ये फर्स्ट ट्रायंगल के आर्म्स है. देख लो OP, OQ एंड PQ. ओके, तो हम लिख सकते हैं हियर इन ट्रायंगल POQ या OPQ. OPQ. ओके, इन ट्रायंगल OPQ. OP plus OQ is equal to sum of two sides. देख लो OP and OQ, sum of two sides, and PQ is equal to the third side of this triangle. Third side of this triangle. Okay, it means यही तो गिवन है कि सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड. यही तो गिवन है, it means it is possible. So sum of
two sides is greater than third side. Okay, so it is possible. It is possible. इसी तरीके से नेक्स्ट टू पार्ट्स आप सॉल्व कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट टू पार्ट्स आप देख सकते हो. क्लियर. नेक्स्ट वन इज, देखो नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट टू ट्रायंगल्स पे बेस है. जैसे जो सेकंड पार्ट है वो इस ट्रायंगल में है और थर्ड पार्ट इस ट्रायंगल में है. ओके, और उसमें भी सेम है, द सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड of a triangle. Okay, question number 3 is more tricky with the comparison of question number 1 and 2. Okay, वो कैसे है वो बताओ. Question number 3, question number 3. Question number 3, AM is the median of a triangle ABC. AM is the median of triangle ABC. AM is the median of triangle ABC. ये M हो गया. AM is the median of triangle ABC. Okay. Median है, it means it is the midpoint of this arm or this side. It means these two are equal with each other. Clear? इस AB plus BC हमने ये प्रूव करना है is AB plus BC plus CA is greater than 2AM. मतलब ये चीज है या नहीं है. ओके, AB plus BC plus CA is greater than 2AM, मतलब इसके डबल से बड़ा होगा या नहीं. तो देखो इसमें भी दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं. इस मीडियन के बनने से दो ट्रायंगल, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल AMB, ये वाला ट्रायंगल इन ट्रायंगल AMB, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है. ओके, यहां भी ये सिंबल लग गया. जैसे एंगल लग गया तो ये लग गया, तो ये एंगल हो गया AMB. और अगर ट्रायंगल लग गया तो ये पूरा ट्रायंगल कंसीडर होगा AMB बना. AMB इन ट्रायंगल के अंदर हमने कंसीडर करना है. ओके, तो हमें बताया एनी टू आर्म्स सम शुड बी ग्रेटर देन थर्ड आर्म. ओके, तो अब अपने कौन सा सम ले, ये दोनों ले या ये दोनों ले या ये दोनों ले, कौन सा ले. उसके लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि AM एक साइड पे होना चाहिए और AB एक साइड पे होना चाहिए. क्लियर. तो AB तो कंफर्म है एक साइड पे आएगा और AM अकेला होना चाहिए, इसके साथ कोई छोड़ नहीं होना चाहिए. तो AM अकेला होगा तो इसके साथ कौन सी आम आ जाएगी, PM. समझ रहे हो मेरी बात. देख लो दोबारा कि हमारे पास AB एक साइड पे होना चाहिए AM. देखो AM एक साइड पे अकेला है, तो इट मींस AM एक साइड पे होना चाहिए अकेला. तो थर्ड आर्म की फॉर्म में हम ले लेंगे और टू आर्म्स का सम कौन सा लेंगे, AB plus BM. ठीक है, दैट मींस सम ऑफ टू आर्म टू साइड्स is greater than third side. Okay, it means AB plus BM. AB plus BM. देख लो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ये वाला AMB, ये वाला AB plus BM should be greater than AM, should be greater than AM. Clear? अब ये इन दोनों का सम जो है वो इस थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए. नेक्स्ट वन इन ट्रायंगल, सेम यही इस ट्रायंगल में यूज करेंगे AMC. AMC in triangle AMC. Clear? Sum of two sides is greater than third side. इसको इनइक्वालिटी 1 दे देते हैं. इनइक्वालिटी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसके बीच में इक्वल टू का साइन है. जिसमें इक्वल टू का साइन है वो इक्वेशन नहीं होगी, वो भी इनइक्वालिटी. ओके, इसको फर्स्ट दे दिया. ओके, थर्ड साइड देख लेते हैं. टू सम ऑफ टू साइड्स. अब इसमें भी सोचना है कि इन दोनों का सम करना है, तो वही AM अकेला होना चाहिए. तो AM थर्ड साइड बनेगी और these two are two sides. तो AC plus CM, AC या CA प्लस, दोबारा देख लो, CA plus
सी एम। ओके, ये एन सी ए की बात है, तो सी एम सी ए प्लस सी एम शुड बी ग्रेटर देन ए, should be greater than a. This second inequality. Okay. Now we have to add these. Okay. Add first and second. अब ये कैसे ऐड करते हैं वो चीज ध्यान से देखो। देखो इसमें एक LHS है और एक RHS है, इसमें भी एक LHS है RHS है, तो LHS को LHS में ऐड कर दो और RHS को RHS में। तो LHS को LHS में ऐड करोगे तो AB प्लस BN प्लस CA प्लस CM, देख लो AB प्लस BN प्लस CA प्लस CM इज ग्रेटर देन AM LHS में और यहाँ पर भी AM। ओके, नाउ AB प्लस BN, M वाले स्टेप दोनों एक साथ लिख लेता हूँ, BN प्लस CM प्लस CA should be greater than 2AM। AM प्लस AM कितने हो गए? 2AM, 2AM हो गए। नाउ BM प्लस CM, ये रहा BM प्लस CM, BM प्लस CM कितना हुआ? BC, कितना हुआ? BC। इट मींस AB प्लस BC प्लस CA should be greater than 2AM। तो ये आ गया हमारे पास प्रूफ, देख लो यही चीज हमने प्रूफ कर ली थी। सो इट इज पॉसिबल, सो इट इज पॉसिबल। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इट इज द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 6 कर सकते हो, और अगर कोई डाउट हो, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू बेटा।